जनवल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Gurudev, 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 Gurudev. Prabhupada, 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 Prabhupada. जय श्री राधा माधव की जय। जयं विष्णुपाद परमहंस परिव्राज कचर्य श्रीमत् गौर गोविंद स्वामी शील गुरुदेव की जय। जयं विष्णुपाद परमहंस परिव्राज कचर्य श्रीमत् ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी शील प्रभुपाद जी महाराज की जय। जयं विष्णुपाद परमहंस परिव्राज कचर्य श्रीमत् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय। नामाचर्यशील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। मथुरा धाम की जय। मायापुर नद धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। तुलसी देवी की जय। भक्ति देवी की जय। श्रीमती राधारणी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। All glories assembled devotees, Hare Krishna. All glories assembled devotees, Hare Krishna. All glories assembled devotees, Hare Krishna. All glories Shri Guru, Shri Gauranga, Prabhupada Ji Maharaj की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूपं कदामयं ददाति सुपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोर्वैष्णवंशो श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथनीतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादं सहगणललिता श्रीविशाखानितंसो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेशो गोपिका कांतो राधा कांतो नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधी वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येवश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यनाम्ने गौरतिसे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम आनंद लीलामय विग्रहाय हेमावदिव्य छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय श्री चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। श्री चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। श्री चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते।
Hare Krishna. We are the human being and our goal is to just go back home, back to Godhead and develop loving relationship with the Supreme Lord. आमे मनुष्य मानव जाति आमर जीवनर एकमात्र लक्ष्य होछि भगवत धाम को जीवा एवं भगवान को सहित आमे प्रीतिर संपर्क जोड़िबा ये होछि आमर प्रकृत रे धर्म बा लक्ष्य we are not able to do that easily. What is the reason why it is happening? आमे सहजरे ये भली अवस्था को जाई पारुना हूँ तार कारणता कौन? The reason is that we are having bondage. We are conditioned. आमे माने समस्ते बंधन दशारे अच्छु बा बद्ध दशारे अच्छु and that is the reason. So, and also there are so many obstacles which are not allowing us to go back home, back to Godhead. आमर किछि प्रतिबंधक आमको भगवत धाम को जीवा को दौ नहीं गोटे जिनिस होछि जे आमे जते बेले संपूर्ण भाव रे दोष मुक्त हो जीवा सेते बेले आमे भगवत धाम रे प्रवेश रो अधिकार पाइबा. The thing is that when we will become completely free from material contamination, then we will be eligible to go to Bhagavad Dham, the abode of Bhagavan. And why this contamination we are getting in this world? कहीं से दोष आमर आसुची दोष मुक्त नहले तो भगवान को धाम को जाई हबो ना ये दोष आमर कहीं के आसुची बा हमें कहीं की दोष दुष्ट हो जाउछु. That is only due to the influence of modes of nature. Due to that, we are getting contaminated and we are not able to go back home, back to God. आमे भौतिक जगतर जो त्रिगुण अछि से त्रिगुणर प्रभाव रे आमे दोषयुक्त हो जाउछु एवं सेतिपाई आमे भगवत धाम को उन्नीत हो पारुना हूँ. यही गुण द्वारा दोषयुक्त हबारू आम भितरे विभिन्न प्रकार क्रिया प्रतिक्रिया सब सृष्टि होछि. ड्यू टू दिस influence of this modes of nature, some action, reactions are developing in our heart. Knowingly or unknowingly, we are becoming contaminated.
জ্ঞাত ସାର ହଉ ବା ଅଜ୍ଞାତ ସାର ହଉ ଆମେ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଉଛେ। ତେଣୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରକୃତେ କ୍ରିୟମାଣାନି ଗୁଣୈ କର୍ମାଣି ସର୍ବସ ଅହଙ୍କାର ବିମୂଢ଼ାତ୍ମା कर्तारं इति मन्यते। This is in Bhagavad Gita, chapter 3, text 27. The spirit soul, bewildered by the influence of false ego, thinks himself the doer of activities that are inactually carried out by the three modes of material nature. ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭ୍ରମିତ ଆତ୍ମା, ବିଭ୍ରାନ୍ତ ଆତ୍ମା। ତେଣୁକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ତ୍ରିଗୁଣର ଅଧୀନ ହେଇଯାଇଛୁ ଏବଂ ନିଜକୁ କର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରୁଛୁ। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏ ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜ କର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ଏ କର୍ତ୍ତା ଅଭିମାନ କୋଉଠୁ ଆସିଲା? This type of pride that I am the doer of all activities, where from it came? This came from body consciousness. ये सब आसुची आमर शरीर धारणा। तेणु जो माने ए शरीर धारणा रहिबे से माने निश्चित भाव रे बद्धावस्था भोग करिबे। Those who will remain in the conception that I am body, they will get this bondage in this material world. And they will get the influence of the modes of nature, especially Rajagun and Tamagun, mode of passion and mode of ignorance. शरीर चेतनार थिबा व्यक्तिटा एई गुणर द्वारा प्रभावित हेबो, विशेष करी रजगुण एवं तमगुण द्वारा प्रभावित हेबो। जदि जने रजगुण एवं तमगुण द्वारा प्रभावित हुए तार की प्रकार परिवर्तन हबो बा की प्रकार कार्यबली हबो। If someone will be influenced by mode of passion and mode of ignorance, what will be his activities? रागो द्वेषो लोभो शोको मोहो भयो मानो अपमानो हिंसा क्रोध एगुड़िक बढ़। By the influence of this mode of passion and mode of ignorance, one will have this type of qualities like raga, liking or attachment,
dvesa, envy or disliking, lobha, greed, shoko, lamentation, moho, delusion, bhaya, fear, man, demanding respect, apaman, insult somebody or disrespect someone, hingsa, violence, krodha, anger. So if someone will have all these qualities, how he can go to the supreme abode? ଯଦି ଏଇସବୁ ଗୁଣ ରହିବ, ଆମେ କ'ଣ କେବେ ପରମ ଧାମକୁ ଯାଇପାରିବା କି? ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ କ'ଣ କରିବ? ନା ସିଏ ପରଛିଦ୍ର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବ, ମତ୍ସରତା ପ୍ରକାଶ କରିବ, କ୍ଷୁଧା, ନିଦ୍ରା, ଅସହିଷ୍ଣୁତା ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ତା ପାଖରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। The person who will be influenced by modes of nature, he will have again the quality to find fault with others, matsarata, envy, too much hunger, too much sleep, then intolerance. ତେଣୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ଭକ୍ତ ପ୍ରତି ଈର୍ଷାତରାନ ହେଇଯିବ। ଏସବୁ ଯଦି ତା ପାଖରେ ଗୁଣ ରହେ, if this type of qualities one will have, he will become envious towards Bhagavan Krishna and Krishna Bhakta also. So, ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ, ଏଇସବୁ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ତାର ଶତ୍ରୁ ହେଇଯିବେ ଏବଂ ତାକୁ ବିପଥଗାମୀ କରେଇବେ। This type of qualities will become his enemies and they will direct the opposite path or bad path. ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଗୁଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସତ୍ୱଗୁଣଟା ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚ ଗୁଣରେ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ will be victimized. Even the three modes of nature, among them sattva, mode of goodness, is the highest one. But still, when one will remain in this sattva guna, mode of goodness, he is also being affected. In Bhagavatam, 7th canto, chapter 15, text 43, Narada Muni is saying,
rago, those force of nature. And due to this influence of three modes of nature, the qualities, bad qualities we are developing. How to become free from that? We do not have that strength to fight against it. आमर से बड़ी बड़ नहीं या विरुद्ध रे स्वर उत्तोलन करिबा बा युद्ध करिबा ए बड़े आमर किसी बड़ नहीं तेणु आमको किसी बड़ संचय करने को पड़ो एवं सेटा की बड़ ना चित बड़ परमार्थिक बड़ we will have to get some strength to fight against this, and that strength is spiritual strength. यदि परमार्थिक बल जनक पाखे हो गला सी ये जो दोष गुड़ी को खूब शीघ्र विदा करदेव ये दोष खूब शीघ्र मुक्त हो If one will have spiritual strength, he can become free from all these bad qualities. तेणु भगवान कृष्ण अर्जुन को सही कथा शिक्षा दौरान कि तुम्हें ये त्रिगुण ऊर्ध्व को जाओ. In Bhagavad Gita, Bhagavan Krishna is giving instruction to Arjuna. Go beyond these three modes of nature. In Bhagavad Gita, Krishna is acting as Guru. Arjuna is listening as disciple. Bhagavad Gita re Arjuna शिष्य होती कृष्ण गुरु होती तेणु शिष्यर कर्तव्य होची गुरुंकर परमार्थिक उपदेश को ग्रहण करवा. The शिष्य disciples duty is to accept the spiritual instruction given by Gurudev. तेणु आज आम कहूँ जड़े आसते कहूँ एटलिस्ट निहाती पक्षरे आम सत्वगुण रहा चेष्टा करवा. यही सत्वगुण रहिले गोटे सुविधा हम कौन ना आमे ब्रह्म जिज्ञासा करी पारिबा. ये गोटे सुविधा सत्वगुण अच्छी. One facility is there, one good thing is there. If one will remain sattva, the modes of goodness, then he can inquire about the Supreme Brahman. जो माने ये भौतिक जगत रे निजर किछि
शारीरिक मानसिक सुख पाई धाउंचंती। से माने ए भली जिज्ञासा करि पारिबे ना। Those who are in material world running after sense gratification, they cannot inquire about the Supreme Brahman. तेणु ये जीव जगत को तार भगवत चेतना ताको दबा पाई निजे भगवान ये जगत रे आविर्भूत है। In order to give some God consciousness to the jivas, Bhagavan, he appeared here. As Gauranga Mahaprabhu. महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु परे एठारे से प्रवेश आविर्भूत है। तेणु वर्तमान भगवान गौरहरि आविर्भूत हेले एवं गौरहरि बहु प्रिय भक्त मान सहित आसते। महाप्रभु डिडंट कम एलोन, ही केम विथ हिज एसोसिएट्स, डियर डिवोटीज। And he gave some seed to the jiva so that they will not wander anymore in the Brahmanda universe. Before the human beings, they are undergoing so many species, so many Brahmandas. से आसिले जगतर जीवन को एक बीज प्रदान कले, जो बीज प्रदान द्वारा ये जागतिक जीव माने आउ ब्रह्मांड भ्रमण करिबे ना, सेई बीजटा प्रदान कले। तेणु आमे देखिबा जे सेई जो बीजटा भगवान प्रदान कले से कहा जरिया रे कले तांकर निज भक्त जरिया रे कले। We can see that Bhagavan Gaurahari, he gave that bija seed, but through whom? Through his own devotees, disciples. Therefore, Chaitanya Charitamrita say, Brahmanda Bhramite, कौन भाग्यवान जो गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता दी। At the time of wandering in this Brahmanda, if a jiva is becoming very fortunate, he is getting the seed of bhakti
by the mercy of Krishna and Karsana. That means Mahaprabhu and Mahaprabhu's Bhakta. So earlier we said that unless one will get spiritual strength, paramarthika strength, he cannot get rid of these all bad qualities, cannot get rid of the influence of these modes of nature. Now we came to know how that spiritual strength is coming to an ordinary jiva. आमे पूर्वरु कहिलु ना जे चित बल बा परमार्थिक बल नहेले जणे ये तीनिटी गुणर प्रभाव मुक्त हो पारिबो ना, कौन सी बदगुण बा दोष जो जीवना। तेणु यही जो चिद्बल प्राप्तिर कथा वर्तमान कहुची केमिति प्राप्त हम जड़े। Now we said how one can get that strength, spiritual strength. When one will become fortunate, he will get it through the mercy of Guru and Krishna. And that is Bhakti Lata Bij. से चिद बल पारमार्थिक बल से प्राप्त हम गुरु और कृष्ण कृपारू। गुरु कृष्ण वर्तमान भक्तिलता बीज प्रदान कले। जी जो गुरु आमको भक्तिलता बीज प्रदान करुछंती से होचंती सद्गुरु। The guru who is giving us seed of bhakti, he is considered Sadguru. So now we came to know how one can progress in spiritual path without having any material dualities. ताहले जनकर जो भल मंद बाछुला जड़े बा जनक पाखे भल गुण मंद गुण रोला युवाक आउ से किसी प्रभाव पकेबना। One was having bad quality, good quality, and also one was always thinking this is good, that is bad. That type of dualities will not be there when one will get spiritual strength. जेतेबेले जड़े से चिद्बल पाईगला तार भल मंद गुण रहा भल एटा मंद एटा ये सब जिनस रहा एवं से खूब शीघ्र परमार्थिक दिगरे अग्रगति करिवो। Soon he will progress in spiritual path. So how one can come to Sadguru? That also Narada Muni said. नारद मुनि कहते कि बड़ी भाव रे
सेवेन्थ कैंटो भागवतम किभଳି ଭାବରେ ବା କେଉଁ ଉପାୟରେ ଜଣେ भगवत दिगरे अग्रगति करिपारिब जावन्न कायरात्मा जावन्न कायर तमात्मा वो सोपकल्पम धत्तेङ्गैष्ट चरणार्चनया निशातम ज्ञानासीवञ्चित बंदो बदहस्त सर स्वानंद तुष्टोपशांत ईदं विदयात चैप्टर 7 टेक्स्ट 15 sorry canto 7 chapter 15 text 45 As long as one has to accept a material body with its different parts and paraphernalia, which are not fully under one's control, one must have the lotus feet of his superiors, namely spiritual master and the spiritual master's predecessors. By their mercy, one can sharpen the sword of knowledge, and with the power of Supreme Personality of Godhead's mercy, one must then conquer the enemies mentioned above. In this way, the devotee should be able to merge into his own transcendental bliss, and then he may give up his body and resume his spiritual identity. जे पर्यंत जणे ये जड़ शरीर धारण करुछि तार विभिन्न प्रकार अंश अंग प्रत्यंग एगुड़ी धारण करुछि सेति निमित्त से एक उचित गुरु बा आचार्य उपयुक्त आचार्य पाद पद्म आश्रित हेबा उचित एटी कहुच्छी वन मस्ट हैव द लोटस फीट ऑफ हिज सुपीरियर्स namely spiritual master and the spiritual master's predecessor. The problem, many, they don't want to follow the master's predecessor. Even if someone will speak something, many they will criticize. Prabhupada has not said, why you are saying all this thing? Hey, Bhakti-Jan Saraswati Thakur has said, Are Baba, what Bhakti-Jan Saraswati Thakur? Do you know Prabhupada nicely? If you don't know Prabhupada nicely, why you are going to Bhakti-Jan Saraswati Thakur? Many they do like that. Where from Prabhupada Ji Maharaj got to knowledge?
from his Guru, Bhaktivedanta Saraswati Thakur. If we are going to repeat the words of Bhaktivedanta Saraswati Thakur, why you people are becoming very much intolerant? What the reason? Here clearly said in this verse, Narada Muni is saying this. It is पूरा कही जे गुरु गुरुंकर आगर जे गुरु अच्छे ये मानकर आश्रित हवा कथा आमर गोटे बड़ रोग तुम्हें प्रभुपाद कथा छड़ा आ कि कहना आउ कारी कथा कह ये कौटिया कथा कि प्रभुपाद क्या कथा कहते गुरु कथा कहते आम गुरु कथा कहले तुम असुविधा कौन है ये भाया सब अच्छी एवं ये कहुई सिंगुलर नंबर नुहे प्लुराल नंबर by their mercy. It is not said by his mercy. Spiritual master and his predecessor by their mercy. एठी कहुई जे तुमर गुरु एवं गुरुकर प्रिवियस आचार्य या कथा कहुई केवल तुम गुरु कथा कहुई एवं एठी जो कहुई जे तार ज्ञानर छुरिका बा खड़ग को से तीक्ष्ण करि पारिबो तांकर कृपार सेमानक कृपार बाय देयर वर्स सेमानक बहु वचन कहीं कहगला केवल कहता गुरुंकर कृपार तुम पाई सेमान कृपा so it's a very important thing. By their mercy, one can sharpen the sword of knowledge, and with the power of the Supreme Personality of Godhead's mercy, one must then conquer the enemies mentioned above. In this way, the devotee should be able to merge into his own transcendental bliss, and then he may give up his body and resume his spiritual identity. तेणु ये कहुची जे यही भली भाव जड़े तार दिव्य आनंद मध्य से बुड़ी रही पार तेणु मोट कथा जे जदि आमे यही तीर्ण को अतिक्रम करी पारिबा ताहामे दिव्य आनंद सन्धान पाई पारिबा. The conclusion is that if we can overcome the influence of three modes of nature, then we can get the transcendental bliss. एठारे आ गोटे कथा कहुची जे गुण मानक मध्य सत्वगुणटा श्रेष्ठ गुण
ତେଣୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଜଣେ ଏଇ ସ୍ତରକୁ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ସତ୍ୱଗୁଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କାରଣ ଏଇ ସତ୍ୱଗୁଣରେ ରହିବ, ସେ ଜିଜ୍ଞାସା କରିବ, ତାପରେ ସେ ପରମ ସତ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବ, ତାପରେ ସେ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସତ୍ୱଗୁଣର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି। Therefore, there is importance of Sattva-guna, mood of goodness. By mood of goodness, one will inquire about the Supreme Brahman. Then when he will be able to know the Supreme Brahman, he will get Divya Ananda, transcendental bliss. ତେଣୁ ଜଡ଼ ଶରୀରରେ ଥିବା ଏଇ ଅସଂଯତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବା ଅସଂଯତ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ଧାରଣ କରି ରହିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁନାହିଁ। As long one is having uncontrolled senses, uncontrolled limbs, he is not able to go to the Supreme Lord. ତେଣୁ ସିଏ ଜଣେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପାଦାଶ୍ରିତ ହେବ ଏବଂ ସେଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରୁ ସିଏ ପାଇବ ଚିତ୍ଶକ୍ତିର ବଳ। He has to take shelter at the lotus feet of an acharya, and from that acharya he will get the strength of spiritual energy, spiritual potency. କେବଳ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କୃପା ସବୁ କିଛି ନୁହେଁ, ସେଥିରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କୃପା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। Only Acharya mercy is not enough. One has to get the mercy of Supreme Person Godhead Krishna. ତେଣୁ ଇଏ ଉଭୟଙ୍କର କୃପାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ये जो प्रभाव पड़ता शरीर उपरे मन उपरे ये प्रभाव जो जो सब भिन्न भिन्न मंद प्रकृति जागी उठिला, मंद गुण जागी उठिला, से सब धीरे धीरे नष्ट हो गुरुंकर कृपा, कृष्णंकर कृपा। By the mercy of Guru and mercy of Krishna, all the bad qualities were developing due to the influence of modes of nature, it will go. So immediately that jiva will realize about his swarup. संगे संगे से जीवटा ता निजर स्वरूप अवगत हो जेते बेले निजर स्वरूप अवगत हो
परम धाम को जीवापाई तार किसी असुविधा रहे when the jiva will be able to know about Swarup, his Swarup, there will be no obstacle, barrier to go back home, back to Godhead. आ गोटे एटी गोटे कथा अछि केवल निजर स्वरूप जानिले हब ना there is another point by knowing one swarup is not sufficient. One is to know the swarup of the Supreme Lord. केवल निज स्वरूप जानिले हब ना भगवत स्वरूप जानिया पड़िबो सेतिपाई भगवान कृष्ण भगवत गीता रे कहिले जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं जो व्यति तत्त्वतो हो त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म न इति माइति सोऽर्जुन. Therefore Bhagavan said in Bhagavad, my janma, my appearance, my activities are all transcendental. If someone is able to know this by absolute consideration, he will never come back here again. That means he will always remain with me. भगवान कहते अर्जुन को एक कथा जे मोर जन्म मोर कर्म सब दिव्य जे या तत्व जानुची सी आ जगत को फेरगन सी कौड़ी जीव सी मो पाक आस तेणु ये कहुची जे भगवान को तत्व जानिबा मानव जन्मर सर्वोत्तम सिद्धि. Therefore, to know Bhagavan in absolute concentration tattva is the supreme perfection of human life. ये भगवान को जानिया पाई आमको भक्ति पथ अवलंबन करिया को पड़िबो. In order to know Bhagavan, we will have to follow the bhakti path. कारण भक्ति पथ अवलंबन न कले कहीं केवे भगवान को जानी पारिबो ना. No one will able to know Bhagavan if he is not following bhakti path. तेणु ये सुदुर्लभ मानव जन्मी जनी आमको मिली केवल भक्ति करिया. We have gotten this rarely achieved human life only to develop bhakti towards Krishna. Bhagavan saying
that this human form of life is really very helpful. All the acharyas saying also. Very helpful. We can get rid of this suffering. Suffering is here. This is like Bhava Sagar, ocean of material existence. And one can very easily cross over this ocean of material existence. Very easily. ये होची भवसागर ये भवसागर पारी हेबा पाई आमर शरीरटा उपयुक्त अटे किंतु प्रश्न उठिबो जे सागर पारी हेबा पाई तो जहाज दरकार नौका दरकार फेरी दरकार ये मनुष्य शरीर केमती भवसागर पार The question will come in order to cross over the so-called sagar, ocean. We need some boat, ferry or ship. How this human form will help us to cross over this materialistic ocean? Bhagavatam saying, Nudeham adgang surabham sudurlabham prabham sukalapam guru karnadharam mayanukulena navasya taritam puman bhavabden na taretsa atmaha. Oh. 11th canto, chapter 20, text 70. The human body, which can award all benefit in life, is automatically obtained by the laws of nature. Although it is a very rare achievement, this human body can be compared to a perfectly constructed boat having the spiritual master as the captain and the instructions of the personality of Godhead as favorable winds impelling it on its course. Considering all these advantages, a human being who does not utilize his human life to cross the ocean of material existence must be considered the killer of his own soul. ଏଥିରୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏ ଶରୀର ଆମକୁ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ଶରୀରଟା କି ଲାଭ ଦେଉଛି। ଯେଉଁ ଶରୀରଟା କି ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ଗଢ଼ା, ଏହା ଅତି ଦୁର୍ଲଭ, ନୁଦେମ ଆଦମ ସୁଦୁର୍ଲଭ। They rarely achieved one. Very rare achievement. খুব সুদুর্লভ। কিন্তু এই শরীর ଗୋଟିଏ ଦକ୍ଷ
নৌকা ହେଇପାରେ ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ସେଇ ନୌକାରେ ଆମର ଗୁରୁଙ୍କୁ କର୍ଣ୍ଣଧାର ରୂପରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବୁ ଏବଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଅଛି ତାହାକୁ ପାଳନ କରିବୁ, ତାହେଲେ ନୌକାଟି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେ ଦୁଇଟା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଦୁଇଟା ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ବା ଗୁରୁଦେବଙ୍କର କୃପା, ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କୃପା, ଯାହା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କୁହାଗଲା, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭ୍ରମିତେ କୌନ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯିବ, ଗୁରୁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ପାଏ ଭକ୍ତିଲତା ବିଜୁ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ପରମାର୍ଥିକ ଜଗତରେ এই দুইটা কৃপার ସବୁବେଳେ আবশ্যকতা আছে। We will see that here also it is said we need mercy of Guru and mercy of Krishna. Both mercies are needed. In Chaitanya Charitamrita Sloka also we will see the same thing. Guru Krishna Prasada Pai Bhaktilata. So one will just worship Guru, serve Guru, and he will never worship Bhagavan Krishna. He will never serve Bhagavan Krishna. He will not get any benefit. No spiritual benefit. ଜଣେ କେବଳ ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା କରିବ, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିବ ନା, ସିଏ କେବେ କିଛି ଲାଭ ପାଇବ ନା, ପରମାର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଏ। ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବ, ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା କରିବ ନା, ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ପରମାର୍ଥିକ ଲାଭ ନାହିଁ। One will serve Bhagavan Krishna but will not serve Guru. There also he will not get any spiritual benefit. So here it is clearly mentioned that one who is accepting the instructions given by Krishna and he will follow the instruction of Guru, all be guided by Guru, then he can cross over this ocean of material existence. Very easy. Guru को आमे आमर दिग्दर्शनकारी बोलिक ग्रहण करिवु, भगवान कृष्णकर उपदेश गुड़ी को आमे ग्रहण करिवु, ताहले अति शीघ्र आमे एई भवसागर पार हो जाई पारि, से कथा एटा कहा जाउछि। तेणु आमे एठारे गुरु एवं कृष्णकर नियमित सेवा करिया को पड़िबा। We should regularly serve Guru and Krishna. Guru kripate Krishna, Krishna kripate Guru.
गुरु कृपा कले कृष्ण मिले, कृष्ण कृपा कले गुरु मिले। हाँ तेणु एठी कहुछि जो माने एई गुरु कृष्णंकर कृपा आवश्यकता करूना, आवश्यक करूना, से माने कौन होचंती ना आत्महा, आत्मघाती। Those who are not seeking for the mercy of Guru and Krishna, those who are not serving Guru and Krishna, they are becoming killer of their own self. So, आमे जानिछु आमर लक्ष्य कौन आम लक्ष्य ना भगवत प्रीति, लव ऑफ कृष्ण, दैट इज द गोल ऑफ आवर लाइफ। भगवान प्रति प्रीति, द गोल ऑफ लाइफ इज love of Krishna, develop love for Krishna. किंतु गुरु प्रीति व्यतिरेके ये भगवत प्रीति जागृत होना। But if you not have love for Guru, we cannot develop love for Bhagavan Krishna. Therefore, Srila Vishwanath Thakur said, Jasya prasadat bhagavat prasado, Jasya prasadanna gati kutopi. Where is the goal? Cannot get the goal because we have not pleased our Guru, and we cannot please Krishna also. When someone will be able to please his Guru, he will be able to please Krishna. जने जिते निजर गुरु को संतुष्ट प्रीत करि पारिबो, से भगवान कृष्ण को प्रीत करि पारिबो, संतुष्ट करि पारिबो। आमे पूर्वरु एठी आलोचना कलु जे आमु किछि पारमार्थिक बलर आवश्यकता अछि, नहले आमे त्रिगुणर प्रभाव मुक्त हो पारिबा नहीं। Before we discuss that we need some spiritual strength in order to become free from the influence of modes of nature or all bad qualities. Then Gurudev, he will give that spiritual strength. Kripa bhava. Gurudev will give that kripa bhava. Because he is a manifestation of Baladeva.
गुरुदेव आमको कृपा बल देवे कारण सी होती बलदेव को प्रकाश विग्रह। एठी पुणी कहुई गुरु कृष्ण प्रसाद खाली गुरु कथा कहनी तेना कृष्ण को बल भी दरकार कृपा बलटा भी दरकार। Here it is said Guru Krishna Prasad, the mercy of Guru and Krishna. So only Guru's kripa, mercy strength will not work. We need mercy strength of Krishna also. हमको कृष्णकर कृपा बलटा भी पाइबा पड़ो। से कृपा बल कृष्ण कृपा बल आम भितर संचारित हम केतेबेले ना जेतेबेले गुरु आम उपर प्रीत हो। The mercy strength of Krishna will come to ourselves when our Gurudev will be pleased on us. Chariot, horses, Similarly, as long we are living in this world, as long we have gotten this material body, we must make all endeavor to get the topmost perfection of life. जे पर्यंत ये भौतिक शरीर अच्छी बा मिली से पर्यंत आमे मानव जीवन परम सिद्धि प्राप्त होगा पाई प्रयत्न करिबा। We should make all efforts to get the perfection of human form of life. तेणु यही जो माने भक्ति स्तर रहिबे से माने ब्रह्मभूत स्थिति रहिबे। Those will remain in this bhakti stage, they will remain in Brahmabhuta state. So, Shoko, Boho, Bhayo, all this will go in Brahmabhuta state. Brahmabhuta स्तरे एवं किसी शोक मोह भय मान अपमान ये सब किसी रहिबन। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। वर्तमान जेहेतु आमे ब्रह्मभूत स्थिति को आसीना आमर बहुत किछि आवश्यक अछि
Since we have not come to Brahmabhuta state, we have so many desires, so many wants. Because without Brahmabhuta sthiti, whatever sthiti we are having, no complete bliss is there. आम जेकोसी स्थिति रही पारू जदि आम ब्रह्मभूत स्थिति को न जाइछु ताहले आमर पूर्ण आनंदर प्रश्न उठना तेणु ये अवस्था प्राप्त हैला परे आउ कौन सी भौतिक आशा होइबो ना if someone will come to this stage he will not have any material desire finished एटी गोटे आमर पाई विपद अच्छे से विपदटा कौन ना ज्ञान मार्गी ब्रह्मवादी जो मन की माया से माया मुक्त बोली भावुंट किंतु मायार अच्छा से मान को जदि आम संस्पर्श आसी गलु ताहले आम जीवन व्यर्थ हो इफ यू विल कम इन कांटेक्ट विथ द मायावादी और impersonalist ज्ञानी so-called ज्ञानी then our life will become doomed finished मायावादी भाष्य सुनले ओय सर्वनाश सेमाने जमती माया 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 कोई सब त्याग करिकी मध्य माया भीतर अच्छा आम अवस्था मध्य से हम आमे केबे माया मुक्त हो पारिबा ना since they are always saying Maya, 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 and they are thinking they are free from Maya, but still they are in very influence of, strong influence of Maya. If you follow them, we cannot come out from the clutches of Maya. तेणु दूरतिक्रम माया को अतिक्रम सहज उपाय भगवान देले ताउची महामगज प्रपद्यन्ते माया में तरंते ते भगवती तर कोइले भगवान gave the easiest process how to overcome Maya. Simply by surrendering to Bhagavan Krishna, one can become free from Maya. तेणु यही जो भगवान को पाद पद्मरे शरणागत हब तार उपायटा कौन
तार उपाय हूँ भक्ति जड़े भक्तर भक्ति हेले सी शरणागत हम भक्तर भक्ति ना केमती शरणागत हम इफ वन डिवोटी इज हैविंग डिवोशन then he can surrender. Devotion is not there, he is not a devotee. So how he can surrender to Bhagavan Krishna? तेणु भक्ति बलरे भगवान को जिणी जड़े दूरतिक्रम माया को अति सहज अतिक्रम कर by the bhakti strength one will conquer Bhagavan, then very easily he can come out from the clutches of Maya. तेणु आम देखा जे जो माने भगवत पाद पद्म आश्रित हो गले सेमानकर पुनरावर्तन नहीं. Those who have taken shelter in the lotus feet of Bhagavan, or those who have gone back to Godhead, they will never come back here again. जद्गत्वात् न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम. But so-called Mayavadi, impersonalists, they will fall down here. तेणु भगवत प्राप्तिर एकमात्र उपाय गुरुदेव गुरु कृपा. The only way is to get the mercy of Bhagavan is Guru Kripa, Gurudev's mercy. And by the mercy of Gurudev also, one will become free from bodily concept of life. गुरुदेव कृपा रु जड़े शरीर धारणा रु मुक्त हम. एवं ये गुरुदेव निश्चित भाव रे परंपरा आसीथिबा दरकार. The गुरुदेव आचार्य must have come from the disciplic successor. ए गुरुदेवंकर सेवा कर जन कृष्णपाद पद्म अच्छी प्राप्त हो पार. बाय सर्विंग गुरुदेव वन कैन वेरी इजिली अटेंड द लोटस फीट ऑफ कृष्ण. एवं अति सहजरे जड़े तत्वरे भगवान को जानी पारिबो. Very easily one can know Bhagavan in tattva, in absolute consideration. That say tattva କୋଉଠୁ ଆସୁଛି? तत्वविद गुरु से होते बलराम प्रकाश विग्रह. तेणु
ତତ୍ତ୍ୱଟା ଆସୁଛି ବଳରାମଙ୍କ। The tattva is coming from Balaram, and Gurudev is Balaram Prakasa Vigraha. ब्रजेन्द्र नंदन जय सचित हईल से बलराम हईल निताय। तेणु ये कलिजुगे निजे भगवान कृष्ण गौरहरि रूप एवं बलराम नित्यानंद राम रूप एठार आविर्भूत होती। एमाने अतीव धान्य महावधान्य महाकारुणिक। So in this age of Kali, Bhagavan Krishna appeared here as Gauranga Mahaprabhu and Balaram Ji appeared here as Nityananda Prabhu. And they both are the most magnanimous. मार खाया प्रेम दे एमन प्रभु कोथाय आछे। Even beaten by Madhai, Nityananda Prabhu gave prem to Madhai. किए अच्छी जे कि माड़ खाई मत प्रेम दे नित्यानंद प्रभु माधाई को पहाड़ खाई से प्रेम दान कर। ये भौतिक स्थिति बड़ा विपदपूर्ण स्थिति। This material condition of life is very dangerous. तेणु ये भौतिक जगतरू बा भौतिक स्थितिरू रक्षा पाइबा मात्रे जड़े भगवान को कृपा भाजन है पारि। This material condition of life is very dangerous. When one will become free from this material entanglement, he will get mercy of Bhagavan Krishna. এই বলরামଙ୍କର বଳ ଏବଂ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ରାମଙ୍କର ବଳ ଇଏ ଅତୁଟ ବଳ। What do you say? The strength of Nityananda Ram and Balaram is indestructible. So therefore it is a Nyayamatma Balahinana Labhya. तेणु एटी देखा जाउछि जे बलराम को कृपा बल व्यतीत केही केबे जीवनर अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो पारिबे नाही।
ये हूँ मुंडक उपनिषद कथा विदाउट द mercy strength of Balaram no one can get the ultimate goal of life. वैष्णव आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर कौन कहले नितायर करुणा हईबे ब्रजे राधा कृष्ण पावे नरोत्तम दास ठाकुर said when Nitai will shower mercy one will get Radha Krishna in Braja. Again Narottam Das Thakur saying, से संबंध नहीं जार वृथा जन्म गेल तार विद्या कूले कि करिबे तार. If there is no sambandha, no relationship with Nityananda, the life became useless. And where this modern education will help him. तेणु नित्यानंद को सहित जहाँकर संबंध नहीं हाँ तार जन्म वृथा हो गला विद्या ए प्राकृत विद्या ये की प्रकार साहाय्य तक कहिब जने लोक बहुत पैसा वाला आउ जने बहुत शिक्षित संभ्रांत आम कौच संभ्रांत एरिस्टोक्रेट रॉयल फैमिली व्हाट इज द यूज if they have not gotten the mercy of Nityananda or Balaram, what is the use? दुर्लभ मानव जन्मी लाभ दुर्लभ मानव जन्मी लाभ हेछि किंतु मानव जन्मर लक्ष्य हासिल हो पारु नहीं. We have gotten the rarely achieved life, human life, but we are not getting the perfection of that life. तेणु बुझा को हम जे आम पाखे परमार्थिक बल ना आम से लक्ष्य पहुँची पारूना. We should understand this. We are not having spiritual strength, therefore we are not attaining our goal of life. Therefore we need the mercy strength of Gurudev. तेणु आम गुरुदेव कृपा बल आवश्यक करू. सेतेबेले आउ आमको शत्रु माने भयभीत करि पारिबे नाही. जेतेबेले गुरु कृपा बल रे बलियान हे जीव जणे सेतेबेले ताकू आउ
ये जो शत्रु ये भौतिक जगतर शत्रु माने ताकू भयभीत करि पारिबे नाही. If someone will become very strong by the mercy strength of spiritual master, the enemies here in this material world cannot make him frightened. तेणु आमर प्रतिबंधक आमर शत्रुमान को जय करवा बाट होची गुरु कृपा केवल. So our enemies and our obstacles, to make them free or to make us free from their influence clutches, only we need Guru Kripa Bhava, strength of Guru's mercy, mercy strength. Hare Krishna. जय श्री गुरुदेव की जय. जय श्री प्रभुपाद जी महाराज की जय. श्री राधा गोपाल जी की जय. श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा देवी की जय. श्री गौनिताय की जय. जय समवेत गौर भक्त वृंद की जय. निताय गौर प्रेमानंद. जय श्री गुरुदेव की जय. Please accept my humble obeisances. Please kindly explain how material gunas can help us to get liberation. What is that? How material gunas can help us to get liberation. What type of liberation you want? The material qualities will never help to get a real liberation. And the real liberation is to become a bhakta of Bhagavan Krishna and always remain at his lotus feet. That is real liberation. Also, he asked one question, but it is not there. Can Gurudev tell him to again send the question? You should send there. It's not there. I sent message, but he did not reply. दाम सारंकर प्रश्न एथिरे नाही वीडियो रे आसु नाही. तेणु आम जानूँ दाम सार प्रश्न कर किंतु से आम जापारू ये किसी आसुना आउ थे पठेबे.
Huh? Waiting for No other. no other question. How you came to Nidam Sir has given this? Um, the before the the live video got interrupted. Before that, I already saw that he had a question. But now when it got interrupted, then we started the new feed. That comment became lost. I cannot get it. It was disrupted. The connection got cut. ଆଶ୍ରୟ ନେଉଥିବା ଶିଶୁ କେତେବେଳେ ଚିତ୍ ବଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିଥାଏ? ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ଶିଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ତାର ସମସ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଅର୍ପଣ କରେ ସେତେବେଳେ ସେ ଚିଦ୍ବଳ ବା ଗୁରୁକୃପା ବଳ ଲାଭ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୁଏ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। English. Okay, Dan Prabhu, we asked question that when a disciple who has taken shelter of Gurudev, he will be able to get the spiritual strength. When a disciple just give up his independence and completely surrender to Guru, then he will get spiritual strength, chidva. Dr. Alexander, I have heard that Sattva-guna can also help us to get liberation. Can we say that this liberation can be useful in obtaining the supreme goal? The so-called Sattva-guna, you see, these three modes of nature. Why Krishna said, go beyond these three modes of nature? Huh? If Sattva-guna can give liberation and everything, so Krishna would not have said that go beyond these three modes of nature. Even in Sattva-guna, there is some desire. One cannot become free from desires in Sattva-guna. So, if completely one wants to get liberation, he has to come to Shuddha Sattva-guna, pure mood of goodness, transcendental mood of goodness. Right? के नाते पूर्णारूप Vaishnavananda, Indulekha, Nagha, Indomitya, Lavanga, London, Ainamananda, some names are
Vrinda. Vrindavan temple. Cannot see all. Dalmukti. I think they were there. Some connection problems. Acha. Speaking also problem. No, the video just suddenly cuts. I'm not sure why. Signal is there.